या रब सल्ले अला नबीका दाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बासिन सानी। वल्लाहि इन्न मुहम्मदन करिदाफतिन वबिहिल वसूल बिसुद्दतिस सुल्तानी। हाँ मोहम्मद ही का रुतबा है बुलंद बादस खुदा, आपके जरिए से ही होता है वस्ले किबरिया। By God, the Holy Prophet Muhammad is certainly like the Prime Minister in his spiritual relation to Almighty God. And it is through him alone that there can be access for anyone to the threshold of the King, Almighty God. هو فخر كل مطهر ومقدس وبه يباهي العسكر الروحاني। आपकी हस्ती पे नाज़ा हर मुक़द्दस पाकबाज, लश्करे रूहानिया भी आप पे करता है नाज। He is the pride of every purified and holy person. And the spiritual troops of Allah also cherish him and take pride in him. وجه المهيمن ظاهر في وجهه وشؤونه لمعت بهذا الشان। तेरे चेहरे में नजर आता है नूरे किरदगार, तेरे सब औसाफ में हुस्ने अज़ल है आशिकार। The presence of Allah, the Protector, is reflected in the blessed face of the Holy Prophet, and his entire manner and moral conduct sparkles with the same characteristic magnificence. لا شك أن محمدا خير الورى ريق الكرام ونخبة الأعيان। है मोहम्मद लाजरम खैरुल वरा आली मकाम, एक वही तो बरगज़ीदा और चुनीदा है इमाम। No doubt, it is Muhammad who is the best of all creation. He is the essence and vital force of the elect of God. وخير كل مقرب متقدم والفضل بالخيرات لا بزماني। हर मुकर्रब से कहीं बढ़कर है तेरा कुर्बे यार, खैर पर ना के ज़मा पर है फजीलत का मदार। He is preferred over everyone who is front-ranking and has achieved nearness to Allah. And remember that excellence of spiritual rank is because of his virtues, not because of priority in time. فاق الورى بكماله وجماله وجلاله وجنانه الرياني। ताज़गी दिल में लिए ये हुस्न ये जाहो जलाल, शान में है
सबसे आगे आपके सारे कमाल। The Holy Prophet of Islam possesses superiority over all creation due to his spiritual excellence, his elegance and grace, and his majesty, and his ever fresh and spiritually refreshing heart and soul. ألفيته بحر الحقائق والهدى ورأيته كالدر في اللمعاني। रुश्द और इरफान का है आप बहरे बेकिनार, मैंने पाया आपको मोती की मानिंद आबदार। I found him to be the ocean of truths and guidance, and I saw him sparkle like a pearl. لله درك يا إمام العالمين، أنت السبوق وسيد الشجعان। आफरी या सैयदी ए सारे आलम के इमाम, तू सिपा सालार है, तेरा ही ऊंचा है मकाम। May Allah bless you, O leader of the world. You rank the highest and are the bravest leader of the brave. فطلعت يا شمس الهدى نصحا لهم لتضيئهم من وجهك النوراني। तू है वो शम्सुल हुदा जिसका ज़हूर उन पर हुआ, ता करे उनको भी रोशन ये रुखे अनवर तेरा। Then, O son of guidance, the Holy Prophet, you rose on the horizon for their benefit, so that you may illuminate them with the divine light emanating from your glowing face. من ذكر وجهك يا حديقة بهجتي لم أخلو في لحظ ولا في آني। ऐ मेरे बाग़े मुसर्रत मैं तेरे रुख पर फिदा, एक लम्हा भी नहीं दिल याद से तेरी जुदा। O my garden of spiritual delights, I am ever so absorbed in your fond thoughts and from the remembrance of your blessed face. I am not free, even for a moment or a split second. सल्ले अला नबीका दाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बासिन सा।